Warm welcome to all my students. Let us continue our discussion. In the previous class, we discussed up to blastulation and implantation of the blastocyst. Implantation was the process in which the blastocyst, which was around 60 to 100 cell stage, it got embedded inside the endometrium. Endometrium के 12-15 मिलीमीटर थिकनेस सॉफ्ट टिश्यू में ये बीज की तरह अब अंदर जाके बैठ चुका है. अब इसका बाहर गिरने का डर नहीं है. इट इज नाउ सिक्योरली इन प्लेस. बट एक चीज पे आप गौर करो. बाय द टाइम इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस, दिस इज यूजुअली अराउंड 7 to 8 days after ovulation. Ovulation हो गया, within about 1 day fertilization हो गया, about another 4-5 days were required for the fertilized ovum going through stages like 2-cell stage, 4-cell stage, 8-cell, 16-cell, morula stage, and then about 30 cells से ज्यादा, से about 60 to 100 cells के आसपास का blastocyst stage to reach the uterus. जोना पेलुसिडा छोड़ दिया है, जोना पेलुसिडा में से ये स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ है, एंड नाउ इट हैज गॉट इम्प्लांटेड. ये होते होते 7-8 दिन हो गए हैं. बट यू नो दैट इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 days, 14th डे के आसपास ओव्यूलेशन होता है. तो उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 14 days बियॉन्ड दैट, यानी कि 28 days के आसपास तक अगला मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है. अब तक लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं. सो और 6-7 दिन में यू आर गोइंग टू गेट द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन टू स्टार्ट. सो ये एंडोमेट्रियम में बैठा भी होगा तो भी अगला मेंस्ट्रुएशन होकर अगर एंडोमेट्रियम निकलना शुरू हो गया तो उसके साथ वो एम्बेडेड ब्लास्टोसिस्ट भी धोकर बाहर निकल के आ जाएगा. इट विल गेट कैरिड आउट, इट विल गेट फ्लोड आउट. So, it is very important that menstruation should stop. During pregnancy, menstruation does not take place and it should not take place. The purpose for menstruation was that if at all the endometrium tissue, which was very suitable for the development of the embryo and for the development of the fetus, ये अगर इम्प्लांट हुआ ही नहीं, ये अगर आगे बढ़ा ही नहीं, तो फिर उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, फंगस आ जाएंगे. टू अवॉइड दैट मेंस्ट्रुएशन जरूरी था. बट अगर ये इम्प्लांट हो चुका है और अगर प्रेगनेंसी होने वाली है तो देन वी सर्टेनली वांट द एंडोमेट्रियम टू स्टे इन प्लेस. टू कीप द एंडोमेट्रियम इन प्लेस यू नीड प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाता है? कॉर्पस लूटियम बनाता है. Corpus luteum becomes corpus albicans and dies after about 8 to 10 days. So, इसको मरने से बचाना चाहिए. Then it will survive, and if it survives, it will keep producing progesterone. If it keeps producing progesterone, endometrium will not get removed, menstruation will not take place, and pregnancy will continue safely. So, there has to be a mechanism to keep the corpus luteum alive, to not allow it to die. So what is that mechanism? Let us quickly have a look at that. So to understand this, let us clear this board. Let's come back to blastocyst stage, which we have been discussing. Blastocyst mein we have said that there is a set of cells all around called the trophoblast cells, and there are some smaller cells here called as inner cell mass. That is the approximate structure of the blastocyst. This has got embedded inside the endometrium.
ये कैसे इसके अंदर आ गया, इम्प्लांटेशन कैसे हो गया, ये हमने पहले की क्लास में डिस्कस किया हुआ है। यहां जब वो अंदर आ जाता है तो वी फाइंड सम इंपॉर्टेंट चेंजेस टेक प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड, एंडोमेट्रियम में यहां पे कुछ ग्लैंड्स है जिसके सेल्स के सेक्रीशंस बाहर आकर इसको सॉफ्ट बना रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ देयर आर आल्सो ब्लड वेसल्स, सो सम कैपिलरीज आर देयर इन द नेबरहुड। एक आध कैपिलरी इसके अंदर आते आते डिस्ट्रॉय भी हो चुकी है और यहां से थोड़ा ब्लड बाहर निकल के यहां पे सराउंडिंग द blastocyst there is a little mother's blood also, so it is in a way surrounded by a little blood and it can take a little bit of nourishment from the surrounding nutritive fluid which the glands have produced, but इसको और थोड़ा अभी एक important modification जरूरी है। वो modification इस एरिया में होता है and to understand that इसको हम थोड़ा मैग्निफाई करेंगे और यहां क्या प्रोसेस हो रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे। Now we find that the outermost layer of cells over here, which means somewhere in this region, यहां पे क्या होता है, let's see that in detail over here. Some cells over here divide very fast and they divide in such a way that the nucleus divides but cytoplasm does not divide. So you start getting a lot of nuclei. So multinucleate cytoplasm बनना शुरू हो जाएगा. Whenever you get karyokinesis but no cytokinesis, we call that as free nuclear divisions. In other words, suppose ऐसा एक सेल था जिसमें एक न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस डिवाइड होके दो न्यूक्लियाई बन गए। अब साइटोकाइनेसिस होके यहां पे एक सेल डिवीजन भी होनी जरूरी थी, बट दैट डज नॉट हैपन, सो यू गेट नाउ अ सेल विथ टू न्यूक्लियाई। दिस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन साइज एंड द न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्दर एंड नाउ यू गेट 4 nuclei and it further increases in size and you get some more nuclei dividing, 4 के 8 बन जाएंगे हर एक न्यूक्लियस डिवाइड होते गया तो, but cytoplasm will still not divide, so you will start getting a large mass of cytoplasm with many nuclei, multinucleate cytoplasm बन जाएगा। This is what you start getting over here. This appears as if the cells are fused and joined up as one single cell, and so we call this as syncytiotropoblast. Please note the spelling, syncytiotropoblast. ये syncytiotropoblast, syn means fused, cyte means cell, so trophoblast का वो लेयर जिसमें जुड़े हुए joined fused cells है। So this layer you start getting here, and it doesn't stop at that. What it further does is it starts giving out projections. So ये syncytiotropoblast का जो layer है इसमें से finger like projections they start growing down into the surrounding tissue of the endometrium, and they also branch a little, something like this. This is exactly like just as a plant is growing roots and giving out branches, वैसे ही इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और उनके ब्रांचेस आ रहे हैं, और इसके सराउंडिंग में यहां पे क्या है, यहां पे एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम के ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज इनके अंदर आने से डिसॉल्व होते गए हैं, दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड बिकॉज as it came in, it released proteolytic enzymes, lipases, and it destroyed the tissue. That is how it penetrated inside. So capillary की walls भी break हो चुकी है, so यहाँ से bleeding हो गया है. So this is now surrounding blood. So there is mother's blood in the surrounding. Now it can take nutrition like this. So इसके अंदर nutrition चला जाएगा, तो ये nutrition इसमें से इस ग्रोइंग स्ट्रक्चर के लिए अवेलेबल हो सकता है अभी। दिस इज हाउ यू स्टार्ट फाइंडिंग दैट नाउ
there is a closer interaction, give and take between blastocyst and the surrounding mother's blood. Tab tak, while this is happening, inside this, the inner cell mass has started the next step, which is gastrulation. Gastrulation is that process in which the undifferentiated growing embryo starts getting differentiated into the three embryonic layers, which we know as ectoderm, mesoderm and endoderm. So ये तीनों layers में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना, इसका सेपरेशन हो जाना, ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा. गैस्ट्रुलेशन के डिटेल्स हम थोड़े बाद में देखेंगे. पहले हम ये देख लेते हैं कि यहां से आगे ये जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के, एंड देयर आर मेनी न्यूक्लियाई ओवर हियर, एज दे स्टार्ट व्हाट एल्स स्टार्ट्स हैपनिंग. सो व्हाट वी फाइंड इज जैसे ये अपने रूट के जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाना शुरू करेगा, these cells of the sensitive trophoblast, they start producing an important substance called human, Human, human chorionic, CHORIONIC, gonadotropin, GONADOTROPIN. Human, because it is in humans. Chorion is one of the protective layers which you will later find is there in the placenta also. So वो chorion layer से बना हुआ gonadotropin, gonad पे act करने वाला, gonad को stimulate करने वाला enzyme. So this in short is written as HCG, human chorionic gonadotropin. This starts getting released in the surrounding tissue. When it comes into the mother's blood, it will get carried through the mother's blood and it will spread all over the mother's body. And from the blood, it will also reach the corpus luteum. Corpus luteum, which was going to be about to die because ovulation के बाद 8-10 दिन is the life of about 10 to 12 days on the maximum is the life of the corpus luteum. So it is almost reaching that dying stage. तब तक ये chorionic gonadotropin उसके यहां पहुंच जाता है and it stimulates the corpus luteum and does not allow it to die. It encourages it, it stimulates it, it acts as a tropic hormone on the corpus luteum. So now the corpus luteum does not become corpus albicans, it remains as a corpus luteum. We now call it as corpus luteum of pregnancy. So यहां से आगे प्रेगनेंसी चालू रखने के लिए ये एक लॉन्ग लिव्ड कॉर्पस लूटियम बनता है. It does not die after 10 days, which it normally would have died. It remains alive for many days after this. In fact, we find that the corpus luteum stays alive for at least 3-4 months, typically even up to 5 months. तब तक ये corpus luteum अब active रहेगा and not only will it remain alive but it will keep producing more and more progesterone. So under the effect of that progesterone ये endometrium अब और भी बढ़िया thick बन जाएगा, उसमें और भी secretions आएंगे, उसमें और भी capillaries और blood supply अच्छा बनते जाएगा. And because of all of that, it will now be able to support the pregnancy, provide nutrition to the growing fetus very effectively. So this important change is also required to keep the pregnancy continued. Also, one more important thing you can keep in mind is human chorionic gonadotropin मदर की बॉडी में एक बार यहां से रिलीज होके ब्लड के थ्रू स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा तो वहां उसका मेटाबॉलिज्म होकर वहां वो किडनी से फिल्टर आउट होकर मदर की यूरिन में भी आना शुरू हो जाएगा. देन it can be tested, its presence can be tested in the mother's urine and that is what is commonly done as a pregnancy test. I am sure आप लोगों ने advertisements देखे होंगे, some brands and kits for testing pregnancy, Prega News and so on. कोई ना कोई हीरोइन आके बताती है कि माँ बनने का एहसास कैसे होता है और मुझे कैसे पता चला.
प्रेगा न्यूज से पता चला. सो वो जो एडवर्टाइजमेंट्स है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू? दे आर ट्राइंग टू टेल यू दैट यू कैन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी यूजिंग यूरिन सैंपल. दैट सैंपल विच इज बीइंग टेस्टेड, उसमें एक्चुअली the kit is testing for the presence of human chorionic gonadotropin. So this hormone, it will not be produced unless there is an implanted blastula, an implanted blastocyst. So the fact that there is human chorionic gonadotropin in the urine means implantation has taken place and pregnancy is now continuing. Pregnancy test a positive hai. So this is also an important role of human chorionic gonadotropin. So it ensures that there will be no further menstrual loss, menstruation stops, endometrium remains as it is, and the implanted blastocyst will not get carried out from menstrual blood loss. ये भी एक important change आपको याद रखना है. अब इस तरीके से प्रेगनेंसी सेफ हो जाती है, उसका अब लाइफ एंश्योर हो जाता है. While a syncytial trophoblast is forming, just inside that, some cells are rapidly dividing together with cytokinesis, and you start getting a cytotrophoblast also. And over here, the inner cell mass starts undergoing differentiation into 3 layers, a process which we call as gastrulation. Gastrulation के details कुछ सिलेबस में, कुछ स्टेट बोर्ड में, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस में डिटेल्स थोड़े दिए हुए हैं. एनसीईआरटी सिलेबस में वी डू नॉट नीड टू नो गैस्ट्रुलेशन. सो अभी के लिए हम गैस्ट्रुलेशन के ज्यादा डिटेल्स नहीं करेंगे. वी शुड ओनली नो व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन. सो ब्लास्टुलेशन गिव्स राइज टू ब्लास्टोसिस्ट. उसके बाद की स्टेप है गैस्ट्रुलेशन. सो अगर सीक्वेंस देखने जाएंगे तो जाइगोट, 2 cell stage, 4 cell stage, 8 cell stage. 8 cell to 16 cell stage is what we call morula. Beyond this, what starts forming is the process of blastulation, जिसमें से blastula या blastocyst बनता है. Blastocyst का implantation होता है. जैसे जैसे implantation हो रहा है, blastocyst के inner cell mass में differentiation into the 3 embryonic layers, ectoderm, mesoderm, endoderm, starts happening. That process is gastrulation, and because of that, blastocyst or blastula starts getting converted to gastrula. ये कैसे होता है, इसमें क्या steps है? Not in this video. Maybe in a supplementary video we may do that, which we may share separately, क्योंकि वो main NCERT syllabus में नहीं है. तो to avoid confusion, इसको हम अभी नहीं करेंगे. वैसे भी gastrulation is a little difficult to understand. So if it is not a part, if the steps are not a part of the NCERT syllabus, we will avoid the discussion just now. Accordingly, pregnancy का रास्ता अब safe हो गया है. अब इसके आगे जो developments होती है, they go on for about 270 to 280 days. That is the duration of the human pregnancy. That is what we call as, technically pregnancy के लिए word is gestation. So uterus के अंदर जो अब embryo की development होती जाएगी, उसको हम कहेंगे gestation. And at the end of that, around 280 days के आसपास जब गुजर जाएंगे, at that stage the baby will be fully formed and ready to come out into the world, to be born as a newly born infant child. So that childbirth process is what we call as parturition. So ये gestation और parturition, ये जो 2 main आगे के processes है, इनका अब हम थोड़ा सा discussion कर लेंगे. So let's clear this board. Now, in humans, it takes approximately 270 to 280 days. We call it actually or we measure it actually in weeks. So it requires 40 weeks to complete gestation. 40 weeks का human gestation होता है. Each week is about 7 days, so approximately 280 days. These 40 weeks, for our convenience, we divide into 3 main parts which we call as the 3 trimesters.
the 3 trimesters. Tri means 3, mest means month. So लगभग 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर, ऐसे अप्रोक्सीमेटली 3 ट्राइमेस्टर्स. टू बी मोर स्पेसिफिक, दिस डिविजन इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर. सो फर्स्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्राइमेस्टर इज द फर्स्ट 16 वीक्स. सॉरी, द फर्स्ट 12 वीक्स. माय मिस्टेक, द फर्स्ट 12 वीक्स. सो 4 हफ्तों का अप्रोक्सीमेटली 1 महीना, तो 12 हफ्तों के 3 महीने. सेकेंड ट्राइमेस्टर, that is again another 12 weeks. And then third trimester is the remaining 16 weeks. So 12 plus 12, 24 plus 16 बन गए आपके 40 weeks of gestation. This way, we find that some important events take place in the first trimester and so on. So हमारे लिए ये system of dividing the 40 weeks into 3 trimesters is very convenient. इसमें से ये जो first trimester है वो सबसे important है. It is during the first trimester that some of the most important stages of development of the newly developing embryo and fetus are completed. And so इसका importance बाकी इससे थोड़ा सा ज्यादा है. So what all takes place in the first trimester? Let's have a quick look at that. So let's clear this. First trimester में we find that the entire organogenesis, which means development of all the different organs of the body, is totally completed. 12 हफ्ते तक आते आते developing embryo has grown into a large enough size cell, still not so big, but large enough stage where now you find that जहां हाथ होने चाहिए वहां हाथ बन गए हैं, जहां टांगे होने चाहिए वहां टांगे बन गई है, अंदर जहां हार्ट होना चाहिए वहां हार्ट बन गया है, जहां लंग्स होने चाहिए वहां लंग्स बन गए हैं. All internal, external organs, including even the fingers, nails, eyebrows, the eyelids, everything. Even external genitalia. So if it is a female child, then the external genitalia, which will include the vulva, the labia and all of that, that is also in place. Internally, ovary is in place, and we have already discussed that in a female child, लगभग 8-10 weeks के आसपास ही ओवरी के अंदर oogenesis start हो चुका है. वैसे ही मेल चाइल्ड में testes have formed in the abdomen, and gradually they will begin their descent to come and lie in the scrotum by the time 40 weeks are completed. So इस तरीके से सारी की सारी डेवलपमेंट की शुरुआत फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होती है. All the different organ systems, alimentary canal, circulatory system, hands, सब कुछ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है. Which is why first trimester is far more important. अगर इस प्रोसेस में कहीं गड़बड़ आ गई तो हो सकता है एक हाथ ही मिसिंग हो जाए या एक टांग मिसिंग रह जाए. एंड सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर द लेडी इज ऑलवेज मोर केयरफुल. दे शुड बी केयरफुल दैट समटाइम्स सम मेडिसिन्स, सम ड्रग्स, सम एंटीबायोटिक्स could have an effect on the development of the fetus, and some parts may remain undeveloped, so you may get a malformed child. So ये सारे problems avoid करने के लिए first trimester बहुत important है. कभी कभी अगर कुछ जेनेटिक डिफेक्ट हो, क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी हो, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसका अबॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. सो इन जनरल फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट. ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर द already differentiated fetus grows in size, increases in size, and in the third trimester it increases very rapidly. Mainly brain size development increases very fast. It moves on, it progresses very fast, and you start getting a baby with a considerably big head and a brain, and comparatively the rest of the body is not all that big. So all these important stages of development will progress through pregnancy. अब इसमें थोड़े टर्म्स. As long as
the differentiation into different organs, such as the external organs like hands, limbs, legs, nose वगैरह, ये जब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक वो अनडिफरेंशिएटेड मास है, अभी भी अलग अलग ऑर्गन्स सेपरेट आउट नहीं हुए हैं, वो प्रोसेस जब तक पूरा बना नहीं है, till that stage we call the developing structure as an embryo. So 2-cell stage, 4-cell stage, morula, blastula, gastrula, all those are stages of embryo development. Once you can distinguish the different organs, face with eyes, nose, mouth, internally all the organs of the alimentary canal, of the excretory system, जैसे kidneys वगैरह बन चुके हैं, respiratory system, lung बन चुका है, brain अंदर बन चुका है, ये जैसे जैसे सब पूरे हो जाते हैं, then we don't call it embryo anymore, we now call it a fetus, F-O-E-T-U-S. Fetus is the term that we now use. And then all through rest of pregnancy, it is development of fetus. At the time of childbirth, the fetus now starts coming out. What is delivered is now an infant or a newly born baby. So we can also call it as a neo, which means new. Nate means birth. So newly born baby. ये neonate या infant या little baby girl या baby boy, whatever, that will be delivered. So these are some of the terms that we use with reference to pregnancy. अब प्रेगनेंसी होते होते ये जो गैस्ट्रुला के 3 लेयर्स बने हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये आगे चल के which of them gives rise to nervous system, which different body parts come from what embryonic layer. This again for NEET is not so very important. A few questions related to this are possible जो मैं notes में दे रहा हूं. जैसे for example, most of the muscles come from mesoderm. Most of the gonad development, the testes, ovaries, they are essentially of mesoderm origin. Nervous system, a large part is ectoderm origin. ऐसे अलग अलग parts कहाँ से बनते हैं, इसके कुछ important parts मैं notes में आपके साथ share करता हूं. ये NCERT के syllabus में नहीं है. In some state board textbooks, this information is given in great detail. So जिनका वो state board का है, उनको वो पढ़ना है. They have to study that for the state board purpose. NEET और NCERT में ये ज्यादा important नहीं है. फिर भी मैंने notes में उसमें से जो कुछ important parts है वो share करके दिए हुए हैं. अब इस तरीके से progress होते होते धीरे धीरे 280 days जब पूरे होने आते हैं, तो बीच बीच में और भी कुछ important developments होती है. Let's take a quick look at some very important developments in this. So somewhere around 20 to 21 days after the formation of the zygote, what we find is that in the central region of the developing embryo, a little bit of pulsations begin. So एक हार्ट की शुरुआत बहुत पहले लगभग 20-21 दिन में ही शुरू हो जाती है. It is not a 4-chambered heart at this stage. उसमें एट्रिया, वेंट्रिकल्स, आयोर्टा वगैरह ये सब नहीं बना है, क्योंकि अभी तक तो ब्लड भी नहीं बना है. बेबी के साइड में ब्लड नहीं बना है. सराउंडिंग मदर साइड से ब्लड है, बट बेबी के अंदर अभी तक ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है. एम्ब्रियो इज नॉट हैविंग ऑल दीज थिंग्स, बट टिश्यू स्टार्ट्स डिफरेंशिएटिंग. कार्डियक मसल टाइप differentiation begins and it starts gentle contractions. So यहां से in a way heart development शुरू हो जाती है. धीरे धीरे वो complete होके 4-chambered heart बन जाएगा. वैसे ही कुछ और important developments. By the time the embryonic development and fetal development has come to about 4 to 5 months, what we find is the placenta is now developed so well that some of the cells in the placenta, they themselves start producing progesterone. So अब से आगे it does not depend on the corpus luteum of pregnancy for production of progesterone. Progesterone production is taken over by the placenta itself. And placenta is a fantastic organ which is doing the job of
digestive system, respiratory system, excretory system and also endocrine system for the baby. कैसे? तो प्लेसेंटा में एक तरफ से बेबी की तरफ से from baby side an artery comes, so that is what we call as umbilical artery. It spreads out and the blood which is now circulated is collected and brought back through umbilical vein. So baby's blood comes and spreads all through the placenta. Placenta on one side with baby's blood vessels and capillaries on one side and surrounding it mother's blood capillaries. इस तरीके से प्लेसेंटा में यूट्रस की वॉल की साइड से मदर का ब्लड एंड प्लेसेंटा के इस डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर की तरफ से बेबी का ब्लड, ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं. एक साइड से बेबी की कैपिलरीज है, एक साइड के मदर की कैपिलरीज है. You don't get actual mixing of blood. Neither baby's blood goes into mother's body nor mother's blood comes into baby's body. But you can get an exchange of a few things. So nutrients, glucose, amino acids, vitamins, all these things which the developing fetus, developing embryo, they all need. So ये placenta के through baby के side को transfer किया जाता है. Similarly, it needs oxygen. Now inside the uterus, where is the oxygen going to come from? तो वो mother's blood से baby's blood takes oxygen. So it has a slightly more efficient hemoglobin called fetal hemoglobin, which has greater affinity for oxygen. So mother's blood or baby's blood में baby's blood has fetal hemoglobin with greater affinity. So it snatches away, it takes away the oxygen from mother's blood. So it is in a way acting like lungs. But at the same time, carbon dioxide from the baby's side is also given out and the mother's blood accepts that carbon dioxide. So placenta में exchange of gases भी हो रहा है, baby को nutrients भी आ रहे हैं, baby के जो nitrogenous waste products है such as urea and other related compounds, those also get passed on through the placenta to the mother's side and the mother will clear it out through her kidney. The baby does not do susu inside the uterus. उसका excretory system develop हो चुका है, उसका respiratory system develop हो चुका है, but it is in an enclosed space surrounded by some fluid so that it acts as a cushion, it acts as a protection, and there is some layers called amnion and chorion around all of that. Inside that, in a safe environment, the baby is developing. यहाँ पे न उसके पास ऑक्सीजन लंग से डायरेक्ट डिलीवर किया जा सकता है, न बेबी अपना नाक और मुंह खोल के ब्रीथ कर सकता है क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय फ्लूइड. सो द गैसेस, द ऑक्सीजन सप्लाई comes through placenta from mother's blood to baby's blood. So this way we find placenta is doing a lot of jobs. It is doing, as we said, digestive system, respiratory system, excretory system, but साथ-साथ also endocrines. The placenta produces a lot of important hormones. So we saw that around 5th month, progesterone वो खुद बनाना शुरू करता है. Together with this, शुरू में ही उसने human chorionic gonadotropin HCG बनाया था. Now it also produces some more hormones like human placental lactogen, which is expected to play a role in encouraging the mother's breast tissue to start producing milk. By this time, the mother's pituitary increases its prolactin production. Prolactin acts on the breast tissue and milk production begins. It is not released as yet, but production shuru ho jata hai, preparing for lactation, for breastfeeding, for the nutrition of the baby after it is delivered. So इस तरीके से काफी कुछ important hormones भी बनाते हैं. Placenta and later also the ovary, they produce one more important hormone called relaxin. Relaxin, as the name suggests, brings about a relaxation or loosening of what? तो pelvis bones जो है, pubic symphysis जो है, जहां पे in the pubic area, the two pubic bones, the pelvic bones from both sides have joined with the help of a very, very strong fibrous tissue. The fibrous connective tissue, the pubic symphysis,
this gets loosened a little. इससे क्या होता है कि towards the end of pregnancy, जैसे रिलैक्सिन के इफेक्ट से वो थोड़ा लूज हो जाएगा, तो पेल्विस भी थोड़ी सी ढीली हो जाएगी, तो बेबी का हेड उसमें से निकल जाने के लिए इजी जाएगा. कभी कभी बेबी का हेड काफी बड़ा है और पेल्विस का साइज उतना बड़ा नहीं है, तो वो अटक सकता है, डिलीवरी के प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन बन सकता है. तो रिलैक्सिन लूजन्स अप द पेल्विस सो दैट थोड़ा सा हल्का सा मिसमैच है तो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम, द बेबी विल बी एबल टू फाइंड इट्स वे आउट. बाय लूजनिंग द पेल्विस वी मेक द डिलीवरी प्रोसेस अ लिटिल इजियर. सो ये रिलैक्सिन भी बनता है. ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स भी प्लेसेंटा बना रहा है. इस तरीके से धीरे धीरे प्रोग्रेस होते होते at around 280 days it is now time for delivery. It is time for the baby to be born. At this stage, what important developments will we see? Let's try to list out these. So first of all, let's clear this board. First of all, at around 280 days, when it is time for the baby to be delivered, then we find that we observe an important phenomenon called fetal ejection reflex. अब ये कैसे होता है? तो बेबी का जो एड्रीनल ग्लैंड है, it starts producing a little extra amount of corticosteroids. The pituitary of the baby produces ACTH, adrenocorticotropic hormone. Under the effect of that, the baby's adrenal gland starts producing a little higher and higher amount of corticosteroid hormones. These, traveling through the baby's blood, reach the placenta. And in the placenta, they destroy some of the progesterone producing cells. As we have seen, by the 5th month, the progesterone production function has been taken over by placenta. उसके progesterone producing cells destroy हो जाएंगे तो progesterone secretion कम हो जाएगा. जैसे ही progesterone कम हो जाएगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग और यूट्रस को अब प्रेगनेंसी मेंटेन रखना मुश्किल हो जाएगा और वो धीरे धीरे एक जेंटल प्रेशर एक्सर्ट करके बेबी को पुश आउट करने की तैयारी में आ जाएगा. दिस इज व्हाट वी कॉल एज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी और द बिगिनिंग ऑफ द पार्चुरेशन. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. इसकी वजह से अब तक जो यूट्रस बहुत बड़ा हो चुका है और जिसके एग्जिट एंड के पास यानी कि सर्विक्स के पास बेबी का हेड आके फिक्स हो चुका है, वहां पे आके वो अटैच हो चुका है, वेटिंग फॉर गेटिंग डिलीवर्ड, एंड यूजुअली इट इज द हेड विच इज डिलीवर्ड फर्स्ट. तो यहां इस स्टेज में the opening of the cervix has become a little dilated. It has opened up a little more. Because of gentle waves of contraction from the side of the uterus, this gets pushed against the cervix. Cervix is sensitive to pain, and so when it gets stretched a little, what we find is that the cervix experiences pain. This pain causes the pituitary of the mother to produce the important hormone called oxytocin. Oxytocin from mother's pituitary increases whenever cervix gets stretched and experiences pain. So pain in cervix causes oxytocin release from the mother's pituitary. Oxytocin acts on the muscles in the myometrium layer of the uterus. This is smooth muscle, involuntary. It is not under voluntary control, but it is under the effect of oxytocin that it starts undergoing wave-like contractions, starting from the top end of the uterus and traveling all along the walls. So it starts squeezing the baby out. It starts gently pushing the baby out. These waves of contraction initially come not so strong, a little mild to begin with, lasting a few minutes and coming after every about half an hour to 45 minutes. But धीरे धीरे जैसे ये एक वेव आएगी and it will push the head a little more,
causing the cervix to be stretched a little more, causing some more pain and causing further oxytocin release, causing a second strong wave. तो धीरे धीरे वेव्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा तेजी से आते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं, उनके बीच का ड्यूरेशन कम हो जाता है. These strong wave-like contractions are typically what we call as labor pains. Now we say labor has been initiated, labor onset ho chuka hai. This is essentially the first stage of labor. At some stage, a little after this has progressed for a few hours, initially, as we said, is the waves are coming in less frequency. आधे पौने घंटे के बाद एक एक थोड़ा सा gentle contraction, and then धीरे धीरे वो frequency बढ़ते जाने वाली है. At a suitable stage, बेबी के साथ जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसको जो एमनियन वगैरह मेम्ब्रेन्स ने पकड़ के रखा है, दिस कंटेन्ड इन दैट, दे यूजुअली बर्स्ट एंड ऑल द सराउंडिंग फ्लूइड कम्स आउट. एज लॉन्ग एज फ्लूइड वॉज प्रेजेंट, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन बेबी को उतनी इफेक्टिवली पुश नहीं कर सकती, क्योंकि फ्लूइड एक्ट्स लाइक अ शॉक अब्सॉर्बर. एक बार फ्लूइड बाहर आ जाता है, that is what is often called as water being lost. So once the fluid comes out, now the contractions come much faster, far more frequently, and the baby's progress to come out through the birth canal now starts getting speeded up. This is generally what we call as the second stage of labor, and during this, within about usually half an hour or so, the baby gets delivered. This can be helped, this can be assisted by either a doctor or a midwife or ayabai or daima or whatever who is present. They can manipulate the baby, उसको थोड़ा सा पकड़ के twist करके थोड़ा सा जल्दी से निकाल सकते हैं. Once the baby is out, what we find is placenta is still inside. Placenta by this stage is about approximately 8 to 10 inches diameter का disc-like structure attached to the wall of the uterus, with an umbilical artery and vein connected to the abdomen of the baby, where you have the scar left behind, the navel. वहां बेबी का abdomen जो है, यहाँ पे ये attached है, यहाँ से अंदर वो blood और blood अंदर बाहर हो रहा है. So from baby to mother's side up to placenta, and from placenta back to baby. And then of course you have the head of the baby over here, with its eyes and nose and mouth, and its arms and its limbs, its legs and so on. ऐसे बेबी यहाँ पे है. ये इसकी डिलीवरी होके ये बाहर निकल के आ गया through the cervix, through the vagina, it is out into the world. But placenta अभी भी अंदर है और ये attachment अभी भी है. Whoever is carrying out the delivery will now apply some clamps on the umbilical cord about a few inches away from the abdomen side of the baby. So ये baby side है, इस side को placenta है, यहाँ पे umbilical cord will be clamped. उस पे एक clamp लगा के blood flow stop किया जाएगा, and it will be cut over here. Now the baby cannot get any further oxygen from placenta. The moment it stops getting oxygen from the placenta, the baby starts experiencing suffocation. उसको ऑक्सीजन की डिमांड, ऐसे उसमें अंदर फीलिंग जनरेट होना शुरू हो जाता है. जैसे किसी की सांस रोक दी तो उसको जैसे रेस्टलेसनेस होगा, वैसे बेबी को भी रेस्टलेसनेस शुरू हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाती है. तो द ब्रेन इन द बेबी नाउ गेट्स एक्टिवेटेड, एंड what you have studied as respiratory rhythm center and the pneumotaxic center, all these important centers in the medulla and pons which are responsible for carrying out respiration, वो activate हो जाते हैं. उनको सिग्नल मिल जाता है ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया है, सांस लेना जरूरी है. And that causes the diaphragm of the baby to contract for the first time. And that causes a lot of air to be brought into the lungs. तब तक lungs थोड़े बंद है, चेस्ट कैविटी बड़ी है लेकिन लंग्स छोटे हैं. जैसे बलून को
पहले भरने से पहले वो छोटा होता है, वैसे लंग्स इस वक्त छोटे हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने कभी सांस ली ही नहीं है. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम द डायफ्राम गोज डाउन एंड द लंग्स ओपन अप एंड स्टार्ट गेटिंग फिल्ड विथ एयर. इसमें जो बेबी की तरफ से सांस ली जाती है करके, दैट कॉजेज समथिंग लाइक अ क्राइंग साउंड, विच इज व्हाट वी कॉल एज द फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी. बेबी का रोना करके. एंड वो बहुत अच्छी बात होती है बिकॉज इट शोज दैट उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी नर्वस सिस्टम, उसका ब्रेन, सबका डेवलपमेंट इंटैक्ट है. तभी तो उसको समझ में आ गया कि सांस लेना जरूरी है और उसने करके रो के सांस लेना शुरू कर दिया. नाउ वी कैन से द बेबी इज बॉर्न. अब बेबी तो डिटैच हो गई पर प्लेसेंटा अभी भी अंदर है. सो द प्लेसेंटा हैज टू बी रिमूव्ड. नाउ वंस द बेबी इज आउट, तो इतने दिन तक जो बड़ा हो गया था यूट्रस, बेबी को संभालते संभालते ग्रोइंग बेबी के साथ यूट्रस भी बड़ा हो गया था. बेबी बाहर आते ही यूट्रस स्टार्ट्स कोलैप्सिंग ऑन इटसेल्फ. उसकी वॉल्स श्रिंक होके धीरे धीरे छोटी होना शुरू हो जाता है. दैट कॉजेज द प्लेसेंटा टू सेपरेट अवे. सो द प्लेसेंटा गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द यूट्रस वॉल. जैसे इसको ये अटैच्ड है और ये अगर सिकुड़ना शुरू हो गया तो ये अपने आप गिर जाएगा, वैसे ही प्लेसेंटा स्टार्ट्स गेटिंग सेपरेटेड. नाउ बाय पुलिंग ऑन द अम्बिलिकल कॉर्ड जेंटली and by the contractions of the uterus also, the placenta gets pushed out. Then this part is called the third stage, the delivery of the placenta, what is often called as afterbirth. ये भी important है क्योंकि अगर किसी वजह से placenta बाहर नहीं आया तो it can cause severe bleeding, it can even cause death to the mother. And so third stage of labor जिसमें placenta की delivery होती है वो भी important होता है. बेबी बॉर्न हो गई है तो पेरेंट्स वगैरह खुशी मनाते हैं, पर whoever is conducting the delivery उनको प्लेसेंटा की डिलीवरी पर भी ध्यान देना होता है, नहीं तो बेचारी मदर मर जाएगी. इस तरीके से थर्ड स्टेज कंप्लीट होके डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है. पार्चुरेशन इज कंप्लीट. नाउ द न्यूली बॉर्न बेबी with a little bit of umbilical cord still attached to it has started its own breathing. Now it can also start its own feeding. And it is important that as early as possible, according to modern thinking, within usually the first hour to 2 hours itself, the mother is encouraged to take the baby for breastfeeding. This is important because it has been shown that by doing this, the hormones of the mother and the baby, they get suitably nicely influenced, and it helps to form a good bond between the mother and the baby. Also, it is shown that in the first few days, the mother's blood has a very high level of antibodies. Antibodies are protein in nature, so they are solid, and so the mother's milk is very thick. Because of which, पहले के जमाने में ऐसे लोग मानते थे कि ये दूध बहुत गाढ़ा है, बेबी हजम नहीं कर पाएगा, तो शुरू के 3-4 दिन में बेबी को मदर का दूध मत दो, ऐसे पहले मानते थे. बट वी नो दैट इज नॉट अ करेक्ट थिंकिंग बिकॉज दोज प्रोटीन्स, दोज एंटीबॉडीज आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बेबी. The baby has not yet started its own immune system to start functioning properly. उसकी इम्यून सिस्टम अभी भी डॉर्मेंट है. सो उसको अब वो जब तक यूट्रस में था बेबी तब तक तो कोई ज्यादा रिस्क नहीं था, बट अब वो बाहर आ गया तो हवा में अब यहाँ पे वायरसेस है, बैक्टीरिया है. द बेबी कांट डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट एज येट, बट द मदर्स ब्लड कैन डेवलप. सो जो सांसें बेबी ले रही है उसी हवा से मदर भी सांसें ले रही है. सो मदर इज ऑल्सो गेटिंग एक्सपोज टू द सेम टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस. सो मदर्स ब्लड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज which through the milk get passed to the baby and the baby remains protected. And that is why this early milk, which we call as colostrum and which contains important antibodies which get passed into the milk, those are passed on to the baby, and that is also an important step. इस तरीके से बेबी की आगे की डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी, प्रोग्रेस होता जाएगा, and the main function of the reproductive system, which is producing a child, is now completed. With this, we essentially complete our discussion of
the reproductive system as well. इसमें कुछ पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताया हमने एक्सक्लूड किए हुए हैं क्योंकि वो मेन एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है। ऐसे कुछ पॉइंट्स जो लेफ्ट आउट है, इनका कुछ सप्लीमेंट्री वीडियोस हम आपको अलग से देंगे, जिनके बोर्ड के लिए वो इंपॉर्टेंट है, वो वहां से पढ़ सकते हैं। मेन कोर सिलेबस with a little additional information for understanding purpose, that is what we have completed in our discussions and in our lectures. इसके साथ साथ नोट्स और एमसीक्यूज में भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपकी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए गए हैं। इनकी पढ़ाई करके आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आपको आपकी नीट की एग्जाम में बढ़िया स्कोर लाना डेफिनेटली पॉसिबल है। इसके आगे का जो पार्ट है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, in which we will discuss some important features related to the health of a adult female and also some sexually transmitted diseases, but mainly how we can achieve contraception and how we can help a couple who is not having children to have children. ये सारी बातें डिस्कस करने वाले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ लेक्चर्स अब इसके आगे के सेशंस में होते रहेंगे। यहां पे मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्कशन हमारा खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू ऑल दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स सो फार। आई होप यू बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडीज। जय हिंद।